Yesterday, as we know that we gone through the how to create the users and how to set a profile, right? Now, today we are going to कल हम लोगों ने बेसिकली दो यूजर्स क्रिएट किए थे. फर्स्ट यूजर था मेरा होस्ट इंस्ट्रक्टर सेकेंड, और आज का थर्ड यूजर था मेरा होस्ट इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर थर्ड. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू set the password and let's verify this particular account. And to do that, I need to set a password for this. Set a security question. Change password. Now look at over here. When I change the password, now I am able to log in to my third user. If you go to your profile, you can see that the third user or the third host instructor has been logged in successfully. So what I am going to do now, I am going to log out this particular user from this, because क्या होता है कि एक ब्राउजर सिर्फ आपको एक करने के लिए अलाउ करता है. इफ यू लॉग इन एज एन मेन यूजर, राइट, तो आप सेकेंड यूजर करके लॉग इन नहीं रहोगे, आपको बाहर निकाल देगा वो. सो आइदर यू लॉग इन एज अ फर्स्ट यूजर, सेकेंड यूजर, मतलब एक यूजर एक टाइम पे एक ब्राउजर पे लॉग इन कर सकता है, मल्टीपल अलाउड नहीं है. So what I'm going to do now, I'm going to log in as my system administrator profile, that is host instructor से log in करेंगे. Let's log in first of all. Now let me try to log in by using the second user. Okay, and as we discussed that one browser only allows one user to log in into the Salesforce org. What we need to do, either we need to open a incognito window, right? Say login not salesforce.com. इनकॉग्निटिव में फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकंड यूजर के लिए लॉग इन कर सकते हो. लेट्स लॉग इन एज अ underscore and then password is now you can see we logged in as a second user. We logged in as a second user in this cognitive mode. Now we have seen various things are there. अब देखो, क्योंकि ये रेप्लिका कॉपी है किसका, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे सारे के सारे सर्विसेज जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अवेलेबल है, वो सारे के सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. यू कैन सी ए TMS आल्सो, जो हम लोगों ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाया था. बिकॉज इट इज अ रेप्लिका of system administrator, that's why we are able to access these fields and application over here. Now what I'm going to do, I'm going to go to my original profile, that is system administrator. Let's go to user, and in this user I'm going to enter into the profiles. Profiles में जाएंगे, profiles में जाने के बाद, and we know that the profile for the second user is my sysadmin. So I'm going to open this my sysadmin. अब ये कौन कर पा रहा है ये, because I am a system administrator, that's why I'm able to access these users and their profile. So what I'm going to do, I'm going to edit this.
I'm going to edit my sysadmin over which I have created the second user. So if I go down, you can see the various standard and custom object there जिसके permissions यहाँ पे given है. So basically what I'm going to do, I'm going to uncheck these courses from the my sysadmin profile. Let's try to save this. Now we uncheck that permission sets of course object from this profile. तो अभी क्या करेंगे, इस प्रोफाइल में जाएंगे, इधर देखो इधर कोर्सेज पहले दिखा रहा था. इफ आई रिफ्रेश दिस नाउ and if you try to access these courses, you can get a message that you don't have the access to the record. Ask your administrator for help or to request access. It means that you can see the tab, but you are not supposed to access this particular tab. इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेशन हमने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. एंड हाउ वी रिस्ट्रिक्ट द एक्सेशन, हाउ वी रिस्ट्रिक्ट द परमिशन सेट्स, we are able to restrict the permission sets by using this profiles. Okay, now what I'm going to do, अब यहाँ पे मुझे course नाम का टैब शो हो रहा है. If I want to hide this particular tab, what I'm to do, I once again go to that profile over which that user has been created, edit that profile. So once I click on edit, then go down in a tab settings and you have to hide the tab. So you just go down, you will see that course tab is there. You need to by default hide this tab, right? And simply try to save this. If I click on save and if I refresh this particular page, I will refresh this. Tab is not hide yet. Check what happened over here. Let me edit this once again. इधर यहाँ पे इसका रीजन होगा जिसकी वजह से ये हाइड नहीं हुआ है. अदरवाइज I made some mistake over here. Let's go to tab settings, go and let's set default off instead of hidden, and let's try to save this now. Let's hope this time the tab is now disappear from this. You can see there is no tab present over here. Now the tab is hidden or removed from this particular application for the second user only. If you go to your first user, that the system administrator, that is post instructor, इधर जाके अगर आप चेक करोगे, let's try to open this applications into the for the first user. And if I try to open this application, you can see the courses tab is there. If you try to open the courses tab, you can get the data for that courses tab also, right? So what it means you are able to restrict your users
from getting the permissions or from getting the access of that particular data by using this permission sets or by using this profiles, right? तो यहाँ से आप उनका permission set decide कर सकते हो. So in that way you are supposed to use these profiles. अब इधर इसको हम लोग वापस से visible कर लेते हैं. Let's try to do the changes into this. Let's make it default on and let all the access of course object to this particular user. Let me let it mark all. You can see you don't have an access to this purchase. Basically क्योंकि अभी ये देखो ये इसलिए अनचेक्ड है क्योंकि हमको पता है कि we have a junction object called purchase with us which is connected with the student and the trainer. That's why इसकी जरूरत है इसलिए हमने खुद ने इसको हाइड किया था. That's the reason वहाँ पे वो visibility टिक नहीं है ना. Let's try to save this. Now let's go and check whether the course is now available in this second user or not. Let me refresh a few more times. It is a problem of your cookie. That's the reason दिखाई नहीं रहा. कुछ नहीं 10-12 बार रिफ्रेश करना पड़ेगा इसमें हो जाएगा. वैसे डिसअपियर होने के लिए उसने टाइम दिया उसी तरह से या अपीयर होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे लेगा आपको. Okay, so this is all about the profile and the users. We talk about uh, we talk about this in detail regarding the profiles and the users. So let's move ahead and talk about the new security component that is our roles. And to assign a roles, let's open a roles. So, but before we move towards the roles, what role is all about, we need to understand. So for that, I will just open this PPT. As we know, we've gone through various components till that time. Then we've gone through two different profiles. Then we create a replica of that profile. Then we create a user, right? And we assign that user to that profile. यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है. Now let's talk about the organization of employee within the company. So you always remember what is role? Role is a hierarchical organization of employees within the company. So basically this role is of three type of hierarchy. First one is the territory based hierarchy. Second is your product based hierarchy and third is your company based hierarchy. What is meant by territory based hierarchy? Now let us consider an example of Indian Railways. Basically, Indian Railways works on a territory based hierarchy where we found the Southern Railway, Northern Railway, Eastern Railway, Western Railway, Middle Central Railway. Then we have Konkan Railway. Then we have Central Western Railways. So they have divide their company based on the territory or the region base, right? So if a company works like this, then they come under the टेरिटरी बेस्ड कंपनीज और फिर वहां पे जो रोल असाइन होते हैं दैट रोल विल बी असाइंड बेस्ड ऑन द टेरिटरी. ओके, फॉर एग्जांपल बैंक्स. बैंक्स के अंदर भी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है एंड दैट ब्रांचेस वर्क्स ऑन अ टेरिटरी. लेट्स से एसबीआई की अगर हम बात करें तो अमरावती में एसबीआई की अलग अलग ब्रांचेस हैं विच डिनोट देयर टेरिटरी. फॉर एग्जांपल श्याम चौक में है तो दैट इज द टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच. और बडनेरा में एक है, साई नगर में है, दस्तूर नगर में. सो दे हैव डिवाइडेड देयर ब्रांच बेस्ड ऑन द रीजन्स, राइट?
So when you have such kind of hierarchy in your company, then you are supposed to apply the rules based on the territory base. So I hope you understand what is in my territory base. Second आता है product base. To whom you call product base hierarchy. For example, there is a group of Tata, right? We all know about the Tata group, but this Tata group is basically works in a product base. How they have automobile sectors जिसके अंदर वो कार्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं. देन दे हैव अ पावर, टाटा पावर, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. देन दे हैव आईटी सर्विसेज कॉल्ड एज टीसीएस. देन दे हैव the groceries product also. So they are in a multiple product based companies. Okay. So whenever your company works such a product based things, then that company is going to assign a role based on the product base, right? So Tata Steel, so they works in metals. So whatever the metal is there, वो टाटा स्टील में जाएगा. पेट्रोलियम किधर जाएगा. पावर एनर्जी वो टाटा पावर्स में जाएगा. ऑटोमोबाइल्स टाटा मोटर्स में जाएगा. देन आईटी सेक्टर्स टीसीएस में जाएगा. Okay, so Tata is a group which works in a different product-based company. So they are basically going to assign their roles according to the product-based, right, hierarchy. So they maintain the product-based hierarchy. Similarly, you can talk about the Reliance. Reliance is also works product-based, right? Communication के लिए उनके पास में Jio है. Then they have Reliance का ट्रेंड्स. देन दे हैव रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप होता है रिलायंस, है ना. दे हैव वेरियस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आल्सो. देन यू कैन टॉक अबाउट द विप्रो में भी अलग अलग प्रोडक्ट बेस्ड पे काम किया जाता है ना. सो देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज हु वर्क्स ऑन अ प्रोडक्ट बेस एंड देन दे यूज दिस रोल हायरार्की कॉल्ड प्रोडक्ट बेस. नेक्स्ट आता है कंपनी साइज बेस. So basically, company size base is not relevant with the employee size, but basically it is relevant with the customer size. Okay, let us consider an example where we talk about the insurance company. Then insurance company is basically work on a company size base hierarchical model. How they assign a team that you need to work on these celebrities. तो वो सिर्फ उन्हीं celebrities के साथ में work करेंगे. They design the plan according to the celebrities और फिर वो उनके साथ में deal करते हैं. Then there is a team who works with a middle class family. Then there is a team who works with a higher class family. Then there is a team those who works with a lower class family. Okay, so मिडल लोअर उनके साथ काम करने के लिए अलग से टीम बनाई जाती है. एंड दे डिजाइन देयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू. अब देखो 1 करोड़ रुपए का प्लान आप मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं लेके जा सकते हो, राइट. और 1 करोड़ का प्लान बेचने के लिए स्किल सेट भी अलग लगते हैं. सो दे डिवाइड देयर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर कंपनी साइज, मतलब बेस्ड ऑन देयर कस्टमर साइज. सो जिस टाइप के कस्टमर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू बेसिकली वो क्या करते हैं, प्लान डिजाइन करते हो, सेल करते हैं, राइट. So these are the three different types of roles which actually being there, and we need to gone through these territory-based, product-based, and company-based hierarchy, and we assign our users to that particular role. Let's move ahead and go to your developer org. Just open your roles. Now, once you open your roles, now you can see this particular page. You can read the first statement. Set up your role hierarchy to control how your organization reports on and access data. मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके अंडर कौन काम कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका रोल क्या है और उसका स्पेसिफिक काम क्या है, वो प्रोफाइल के अंदर मेंशन किया है. ओके,
So you can see there are three options with us. One is the territory based sample, second is product based sample, third is company based sample. If you open this territory based sample, let me zoom a bit ताकि आपको समझे ये क्या हो रहा है यहाँ पे. Now you can see this particular diagram over here, which reflects that at the top you have a CEO, president, CFO or vice president or a sales वाइस प्रेसिडेंट. ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव स्टाफ होंगे, ये सबसे ऊपर में रहेंगे. देन इट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टेरिटरी. यू कैन सी वेस्टर्न सेल, ईस्टर्न सेल, इंटरनेशनल सेल, नेशनल सेल. स्टेट वाइज भी आप उसको डिवाइड कर सकते हो. विदर्भ रीजन, देन वी हैव कोंकण रीजन, देन वी हैव मराठवाड़ा, देन वी हैव पश्चिम महाराष्ट्र. So we can divide according to regions. तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो. So you can see it is divided into western, eastern, international. And western के अंदर फिर directors आएंगे in the top hierarchy. Then they have a sales reps under that. So it denotes this diagram denotes that how the territory based sample is works. Okay. और इसके नीचे ना एक ऑप्शन आता है, डोंट शो दिस पेज अगेन. इफ यू क्लिक ऑन इट और आपने सेटअप रूल्स पे क्लिक कर दिया तो ये पेज वापस से आपको कभी दिखाएगा नहीं. तो आप हमेशा याद रखो कि ये चेकबॉक्स टिक नहीं करने का, क्योंकि क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं बाद में. अभी मैं बताया तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे. तो जब भी आप रोल्स पे जाओगे तो ये डायग्राम से आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट इज मीन बाय टेरिटरी बेस, राइट. So that's why you don't need to check this. You need to keep this diagram as it is for your better understanding. Let's click on the product base. If you click on the product base, now the diagram has been changed. Now you can see executive staff may CEO, president, CFO, vice president. You can assign the roles to this particular thing. Then you can see there is an hierarchy जिसके अंदर डिवाइड किया है hierarchy को based on the product. You can see hardware product, software product, networking product. So depend upon that, they divide their role. So vice president for hardware, vice president for software, vice president for networking. Under that, they have managers, they have sales reps. Okay. So in that way, you are supposed to set the product-based hierarchy. Similarly, if you go for the company size based, so here you can see the example. You can see Fortune 1000. So mid market. So who said, so what is Fortune 1000? You can target to Fortune 1000 customers, okay, and they assign that particular role to this person or this particular user. Then मिड मार्केट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये रोल असाइन किया गया. सोहो सेल्स पे जो काम कर रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल. ओके, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने हायरार्ची को सेट कर सकते हो. सो बिफोर सेटिंग द हायरार्ची आई नीड टू चूज वन ऑफ द सैंपल. सो लेट्स मूव अहेड विद द टेरिटरी बेस्ड सैंपल. हम लोग समझते हैं कि हमारा कंपनी टेरिटरी बेस्ड के अकॉर्डिंग टू वर्क करता है. So and now we need to set the hierarchy, and now to set the hierarchy we have setup role button over here. You just need to click on that setup role button. Once you click on setup role button, you can see there is a name, company name is given over here, under which if you can see there is a role called CEO already being there. सीईओ के पैरेलल में आपको प्रेसिडेंट अगर चाहिए, यू कैन ऐड दैट बाय यूजिंग दिस ऐड रोल link present over here. Now you can see this add role is present over here, add role is present over here. So this add role is basically under this company, and this add role now basically connected with this CEO. So if you want to make a subordinate or the रोल विच कम्स अंडर द सीईओ, तो आप ये ऐड रोल पे क्लिक करो. एंड इफ यू वांट टू मेक एनी पर्टिकुलर रोल पैरेलल टू सीईओ, देन यू कैन क्लिक ओवर हियर. सो सीईओ के पैरेलल में फिर ये यहाँ पे रोल क्रिएट किया जा सकता है. Now here we have a plus button. If you click on that and try to expand, then you will understand under this CEO we have CFO, we have COO, we have SVP, we have SVP, we have SVP. There are various
roles are being defined. Okay, if I explore one of the role, then you can see CFO के अंदर कुछ भी नहीं है, CEO के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं, you can check there is no role defined under the COO. Okay, so these are the hierarchy. Now you need to assign a user to these particular roles. And if you want to add a new role, you can do it. Let's create one role with a name called president, which is parallel to the CEO. And to do that, I have this add role link over here above the CEO. You need to click on that link to create that particular role. Let us create a role called president. Let's paste the role name. Sorry, role name is automatically populated. The role name displayed on report is president. Let's click on save. Now you can see that the president role has been created successfully. Okay, and it is a sibling of CEO. Okay, it is not come under the CEO, it is a sibling of CEO. Now here you can see there is a button called assign user to role and new user. Before that, what we need to do, we need to create a few more roles in my hierarchy, and then we try to assign the user to this particular role. Okay, so let's try to create. Let's click on back. Let's set up roles. You can see now parallel to this CEO, we have a president with us. Now what I'm going to do, I am going to create one more role under this CEO and which is parallel to CFO and CEO, right? Chief Financial Officer, Chief CEO, कुछ भी बोलते हैं, भूल गया मैं अभी. So I'm going to create one more role parallel to the CFO, CEO, SVP, that is called CTO, that is Chief Technical Officer. So to do that, under the CEO, we have this add role link. You just need to click on add role. Now what I'm going to do, I'm going to create one more role called the name CTO. Let's add the name CTO over here and let's click on. Now you can see that CTO profile has been created successfully. Now what I am going to do, I am going to assign a role of CTO to a particular user. And to do that, what I need to do, I need to click on assign user to role button. Right. Now, I'm not going to click on new user. If I click on new user, then यूजर क्रिएशन वाला टैब ओपन हो जाएगा और फिर वहां पे आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी यूजर राइट नाउ. आई एम गोइंग टू सिंपली असाइन द यूजर टू दिस पर्टिकुलर रोल. सो अब क्या करेंगे, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन असाइन अ रोल. वंस यू क्लिक ऑन असाइन अ रोल, you can see a window over here which reflect कि कहाँ से हमको डेटा लेना है और उसको ये असाइन करने का है. So if you go and go for the all users, यहाँ से मैंने all users select करते ही जितने users मेरे पास में वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे. Now you can select a user from here. Let's say third user. So you can see the third post instructor is now assigned to the CTO. Now remember, you are supposed to assign multiple users to the single role. तो एक से ज्यादा CTO हमारे हो सकते हैं, right? So you can assign a multiple user to a single role. It is possible, but right now for a time being, I am not going to assign multiple users to this single role. I will keep it simple: one role, one user, and then simply click on save. Now the CTO has been assigned to third instructor. Okay, now third instructor is now my CTO in my company. Let's go to the tools once again.
Now you can see you have a CTO. If you click on that CTO, then you will come to know that third post instructor is the CTO of my company. Now what I'm going to do now, I'm going to once again assign a role to or assign a user to CEO, and to do that I'm going to click on assign, and then simply I need to select all unassigned भी ले सकते हो, all users भी ले सकते हो, the way you want, and let's assign it to host instructor, यानी कि हमारा जो first account बनाया था हमने system administrator, I'm going to assign that particular user to CEO. Now the CEO has been assigned. If you want to check, you can go to the CEO link, just click on it, and you find that the host instructor is the CEO of your company. Similarly, what I'm going to do, I'm going to add one more assignment over here for the CFO, and I need to click on assign in front of that CFO. Once again, I need to choose the, now this time I'm going to select second instructor, and then I need to click on save. Now the CFO has been assigned successfully. Now what I'm going to do, I'm going to assign a COO. Let's try to assign a COO. I'm going to select all users, and I'm going to assign host instructor and click on save. But you know that host instructor is already being assigned a role called CEO, and we try to assign the same user with a different role right now, that is COO. So when we click on COO, then you can see that COO is my host instructor. Is it possible to assign two different role to a single user? Let us check. यहाँ पे CEO पे क्लिक करने के बाद में मुझे होस्ट इंस्ट्रक्टर दिखा, but when I click on CEO, you can see there is no role assigned to the user. It means that जैसे ही आपने एक यूजर पे दूसरा रोल असाइन किया तो फर्स्ट रोल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. It means that no टू रोल इज असाइन टू सिंगल यूजर. तो दो रोल आप एक यूजर को असाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन एक रोल के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स असाइन कर सकते हो. मतलब सीटीओ आपके पास में एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैनेजर आपके कंपनी में एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन मैनेजर भी है और सीटीओ भी है, ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना. इट इज नॉट अलाउड. दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई असाइन दैट होस्ट इंस्ट्रक्टर एज अ सीईओ, सीईओ से वो इसका असाइनमेंट रिमूव हो गया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू वंस अगेन असाइन दिस पोस्ट इंस्ट्रक्टर एज अ सीईओ. दैट्स फाइन. नाउ द रोल हैज बीन असाइन्ड to the users. So in that we are supposed to perform the role assignments by using this role options. तो यहाँ पे हमने ना सीनेरियो या फिर बाकी सिक्योरिटी पर्पस नहीं देखे हैं, बस हमने यहाँ पे रोल किस तरह से असाइन करना है, और एक यूजर के लिए एक रोल ही असाइन होता है और एक रोल के लिए मल्टीपल यूजर्स असाइन होते हैं. ये चीज को हमने समझा, ठीक है. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू रोल. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ सबऑर्डिनेट रोल्स. जैसे अभी हमने सीईओ के अंडर सीटीओ क्रिएट किया था, उसी तरह से आप सीटीओ के अंडर भी लेट्स से टीम लीड करके रोल क्रिएट कर सकते हो. लेट्स से टीम लीड, you can create a that particular role under that. Go to your setup roles, go to your roles. Under these roles we have, okay, now you can see under the CTO we have a team lead. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रोल्स को डिफाइन कर सकते हो. With this we finished up with the roles. Let's move ahead and let's talk about
a new thing called a public group. Now, what is a public group? We know that role is a hierarchical of the users. Okay. Whereas public group is a collection of users. ओके, वहाँ यहाँ पे क्या रोल्स के अंदर एक रोल के लिए सिर्फ एक यूजर एक रोल के लिए डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल यूजर्स को टुगेदर, तो इट इज नथिंग बट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ द यूजर इज कॉल्ड पब्लिक ग्रुप। ओके, अब सपोज करो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ बैठा के कोई काम असाइन करना है, तो in that such situation, what you are going to do, you are going to create a public group. When you create a public group, then you are supposed to add two different people or two different persons from the two different teams together, and they come and works together. तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग जनरली पब्लिक ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। So where you find this public group, you can find this public group under the heading called user. So here you can see public groups. You can read this definition present over here. यही definition PPT के अंदर भी है basically. So what is a public group? A public group is a set of users, a random set of users. It can contain individual users, other group, मतलब इंडिविजुअल यूजर्स यानी यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ द यूजर्स, जितने भी अपने 10 5 6 जितने भी यूजर्स आपके इसमें होंगे वो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदर ग्रुप्स यानी कि इसके अलावा कोई ऑलरेडी पब्लिक ग्रुप बना है वहां से मेंबर फेच करना चाहते हो तो आप वो भी फेच कर सकते हो। द यूजर्स इन अ पर्टिकुलर रोल और टेरिटरी, अभी हमने रोल्स इसके पहले क्रिएट किया था, तो अगर हमको कोई रोल ऐड करने का है पब्लिक ग्रुप में कि सीईओ ने काम करना चाहिए, सीटीओ ने काम करना चाहिए, सीईओ एंड देयर सबऑर्डिनेट्स सब ने काम करना चाहिए, देन दैट इज ऑल्सो अलाउड इन अ पब्लिक ग्रुप। Then or the user in the role or a territory plus the users below that role in the territory, मतलब role and their subordinates, मतलब सीईओ और सीईओ के अंडर जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे हम लोग पब्लिक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। So this is the way you basically, this is nothing but a public group. Okay, so in simple word you just need to remember that public group is nothing but a collection of your random users. Okay, now what I'm going to do now, I'm trying to create a public group, and to create this public group I need to click on new, and here I need to assign a label to this public group. Let's say PG1. So I'm going to assign a label PG1. Group name is automatically populated. Now you need to assign a members to this group. Okay, who is going to be a member of this group? Now you can see in a search we have various options with us. One is group, second is role, role and subordinate, and users. As per the definition, what is the definition? Definition says it is a collection of individual users. So basically individual users यानी कि यहाँ से आता है user. Then the definition say other group, which defines public groups. Then it will say individual role and the role with their subordinates. So basically roles and roles with their subordinates. इसका combination को हम लोग कहते हैं public group. They comes together and they works together. Right. तो अभी क्या करेंगे? I am going to select these users. So basically I would add integration user, I would add security user, I would add second user. Then I need to add a roles. So let's add CTO in this public group. Similarly, you can add roles and subordinate. So if you select the CEO के अंदर जितने आते सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे. You can add by using this arrow button. You can remove by this using the remove arrow button. Okay. And you can also select from the public group, but basically right now we don't have any public group. That's why nothing is displayed over here. And then you need to simply save this. Now in that way you are supposed to create your public group. Let's try to create one more public group.
प्लीज वेट अ मिनट, हाँ, एक मिनट वेट कीजिए. Okay, let's try to create one more public group by clicking on this new button. Just give it a name PG2, group name PG2. Now you can see in a public group, you can get this group PG1. Okay, so हमने PG1 already बनाया था, so it means that you are supposed to add a public group into a public group. So I can select this public group. I can also select the role called president. Okay. अब प्रेसिडेंट के लिए कोई यूजर मैंने असाइन नहीं की, बट स्टिल आई एम एबल टू ऐड दिस रोल इनटू माय पब्लिक ग्रुप. whenever I assign a user to this role called president, तो उसको ये पब्लिक ग्रुप का एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, right? So then you just need to click on save to create this public group. So in that way you are supposed to create the public groups in Salesforce. Let's move ahead and let's talk about the last topic of our today's session called queues. Okay, so what is queue? Salesforce queues are the list of records that have no owners. Okay, so basically what is queue? Queue हमको पता है queue क्या होता है, waiting list होती है. So it is also a list where owner is not defined. Okay, so basically it is a list of records. It is not a list of your users, it is a list of records. और फिर हम लोग क्या करेंगे, the records that are not assigned to anyone are added to the queue. queue में ऐड कर देंगे, and any queue member can take ownership of those records. है ना, इसका मतलब है कोई भी क्यू मेंबर्स, तो अभी बेसिकली हम लोग क्यू क्रिएट करेंगे तो क्यू के अंदर मेंबर्स डिफाइन करेंगे. एंड वी आल्सो नीड टू सेट द एस ऑब्जेक्ट. जिस एस ऑब्जेक्ट के पास में ओनरशिप नहीं, एस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के पास में ओनरशिप नहीं रहेगी, वो रिकॉर्ड जाएगा क्यू में, और फिर उस क्यू में से आप ओनरशिप ओन कर सकते हो. तो उसके लिए आपको क्यू का मेंबर होना जरूरी है. तो बेसिकली वी ऐड अ मेंबर्स इनटू द क्यू. फिर क्यू का अगर आप मेंबर हो, लेट्स से वी हैव 3 यूजर्स, होस्ट इंस्ट्रक्टर, होस्ट इंस्ट्रक्टर 2 एंड होस्ट इंस्ट्रक्टर 3. इफ वी एडेड ऑल these 3 यूजर्स एज अ क्यू मेंबर, तो जो भी डेटा क्रिएट होगा विच हैविंग नो ओनर, तो वो सिचुएशन में इनमें से कोई भी क्यू मेंबर्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसका ओनरशिप ले सकता है. सो बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे ओनरशिप डिफाइन नहीं होती है, फिर हायर अथॉरिटी आती है और वो पर्टिकुलर टास्क किसी ना किसी को असाइन करती है और उसका ओनरशिप असाइन करती है कि यू आर द ओनर ऑफ दिस, यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, right? So whenever you assign the ownership to of that data to a particular user, then we simply use this queues. तो क्यू में का मेंबर्स देखा जाता है और उसको फिर वो चीज असाइन किया जाता है. Let's try to create a queue quickly. Just go to your queues. Now under this user we have another options called queues, and to create a queues you just need to click on new. But before that you can read the definition present over here. That is, queues allows group of users to manage and share the workload more effectively. है ना? A queue is a location where record can be routed to await. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में रिकॉर्ड्स होंगे जो वेटिंग में होंगे, जिसका कोई ओनर नहीं रहेगा. सो हम लोग क्या करेंगे, क्यू मेंटेन करेंगे और क्यू के मेंबर्स को ये रिकॉर्ड्स को ओनरशिप असाइन करेंगे, राइट? So to do that, I just need to click on new. So just simply click on new to create a queue, and let's say give it a name Q1. Queue email. It is not a mandatory thing, so I'm not going to set queue email. If you set this particular email ID and click on send email to a member, तो जितने भी मेंबर्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो सारे सारे मेंबर्स को जैसे ही रिकॉर्ड आएगा वैसे मेल जाएगा. Now I need to select the as object over which हम लोगों को
queue maintain करनी है. So basically we create our TMS, that is training management system, under which we create this student object. Okay, so I'm going to add the student object. Then I create a course object. So I need to check for the course object. Now, if you look at this, we don't have any thing relevant with the course over here, but we can find trainer object here. So we can say trainer. Course क्यों नहीं आया होगा? Course ना आने का reason ये है. Course is also a course. It is in a master detail relationship with the trainer. So course is a child object and trainer is a master object, because we know that the owners of child record is always be a parent, right? That's why course यहाँ पे नहीं दिखाई देगा. So whenever you create a course, it connected with the trainer and trainer having their own owners. ओके, तो इसीलिए कोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा. तो जिसका ओनर्स सेट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, ट्रेनर हो गया, इनके ओनर सेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट ओवर हियर दैट स्टूडेंट एंड ट्रेनर शो हो रहा है. तो इसका अगर ओनर सेट नहीं है तो आप क्यू के मेंबर्स को इसका ओनर्स असाइन कर सकते हो. लेट्स स्क्रॉल डाउन. नाउ यू कैन ऐड अ queue members. Now, how will you add a queue members? You can add a queue members from a public group. You can also add a queue members from a roles. तो आप roles भी assign कर सकते हो. You can add roles and subordinates, or you can also add individual users. So I'm going to add some individual users over here. Let's say first, second, and third host instructor. And let's click on save to save this queue. Now, in that way, you are supposed to use this queue, or you are supposed to create this queue in a Salesforce. So with this, I am going to conclude.